Today, in this class, we will try to know about lateral moraines or marginal moraines and medial moraines, which are the two types of surface moraines. In the previous class, we have discussed what are surface moraines. As you know, due to weathering and mass wasting processes which operate efficiently in the mountain slopes, when these materials due to these processes fall on the surface of the glacier and the glacier carries these material, deposited material, which are known as surface moraines. So here we today try to know what are lateral moraines. As you know, lateral moraines are low ridges of rocks, low ridges of rock or rock debris. These are also known as marginal moraines. As I have already told you, this blue shade represents the glacier, and on the margins of the glacier you see here red dotted lines. These red dotted lines represent the marginal moraines, or we can say these are the red lateral moraines which are on the lateral parts of the glacier, on the two sides of the glacier. These one, two, or three tributary glaciers form a main glacier. So, on each tributary glacier, there are two marginal types of moraines, or two side moraines, or two lateral moraines. So, these side deposited material, rock or rock debris, which are on the sides of the glacier or on the margins of a glacier, so of a glaciated valley, are known as the lateral moraines. Simple. So how these are formed? Due to glacial erosion, snow sliding, avalanches in the mountain areas, when they fall on the surface and after they move to the sides or on they left at the middle. So these are all surface moraines, but when we see the rock material, rock debris on the margins of a glacier, on the sides of a glacier, so those moraines we call as lateral moraines. Simply, medial moraines. What are medial moraines? Medial moraines are formed when two glaciers merge. So here you see, when the two glaciers come from the two glaciated valley or from the two tributary glaciers, when they merge, this dotted line, as you already know, this represents the moraines, or these moraines are the lateral moraines of these two glaciers. So when these two glaciers merge through the confluence of the valley, so when these two valleys join here, with the result two glaciers meet, two glaciers join. When two glaciers join, their lateral moraines are dragged. So this lateral moraine of this glacier and this lateral moraine of this glacier drag here. When they dragged along and their coincidence, so what happened? Their join, their merge give rise to a longitudinal ridge. This red longitudinal ridge in the middle part of this big glacier is known as the medial moraine. I will repeat what is lateral moraine and what is medial moraine, क्योंकि आप इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है, आपने पिछले क्लासों में इन चीज़ों की एक्सपीरियंस ले ली है। लेटरल मोरीन्स ऐसे मोरीन्स है, लो रिजेस, छोटे छोटे रिजेस होते हैं ग्लेशियर के दो साइड में। जैसे ग्लेशियर होता है
इसके दो साइड में मैंने रेड लाइन से रेड डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक ग्लेशियर के दो साइड्स में छोटे छोटे ढेर जो रॉक्स के या रॉक डेब्री के ढेर जो बन जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको हम लेटरल मरीन्स कहते हैं। ये ग्लेशिएटेड वैलीज में किसकी वजह से, स्नो स्लाइडिंग की वजह से, या ग्लेशियल एरोजन जब पहाड़ों से आ जाता है, या एवलांचेस जब आ जाते हैं माउंटेनियस एरियाज में, फिर इन ग्लेशियर्स के साइड्स में ये जो रॉक डेब्री जमा हो जाता है, लो रिजेस बन जाते हैं, उनको हम लेटरल मरीन्स कहते हैं। बहुत ही आसान है। इसके बाद जब बात करेंगे मीडियल मोरीन्स की, मीडियल मोरीन्स ऐसे मरीन्स है, ऐसे रॉक डिपॉजिटेड मटेरियल है, डेब्री है, सिलिट होगा, डर्ट होगा, बहुत साइज, किसी भी साइज का ये मटेरियल होगा। जब दो वैलीज, जो पहाड़ों के वैलीज होते हैं, जब वो मिल जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कन्फ्लुएंस जब उनका हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, तो इन दो ग्लेशियरों के ज्वाइन की वजह से, वहां पे दो इन वैलीज जब ज्वाइन कर किसी जगह मिल जाते हैं, इन दो वैल्यूं के मिल जाने से इनके दो ग्लेशियर मिल जाते हैं, जो इनके अंदर बने रहते हैं, पहले से ही ग्लेशियर बनते हैं इन वादियों के अंदर। तो वो जो ग्लेशियर जो दो जब मिल जाते हैं, इनके लेटरल मरीन्स जो है वो भी मिल जाते हैं और वो ड्रैग हो जाते हैं, आगे तक बढ़ जाते हैं। विद द रिजल्ट, जब इनके ये लेटरल मरीन्स आगे तक जाते हैं ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से, और नतीजतन जब दोनों लेटरल मरीन्स मिलके आगे जाते हैं, तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल फैशन में एक रिज बनाते हैं इस मरीन्स का, लेटरल मरीन्स का। और ये एक इस बड़े ग्लेशियर का जो आगे बढ़ जाता है, जो वादी में ग्लेशियर बन जाता है बाद में, उसका मिडल पार्ट बन जाता है ये रिज, और उसी को हम मिडल मोरीन कहते हैं। बहुत ही आसान है समझना, what are lateral moraines and what are medial moraines. So with the help of this diagram, I hope you may have get it easy to know what are the lateral as well as the medial moraines.